Hello everyone. RRB technician key answer shift to 26 December. What is the sum of kinetic energy and potential energy called? The sum of kinetic energy and potential energy called the mechanical energy. The correct answer for this question is mechanical energy. गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को योग के क्या कहलाता है? गतिज और स्थितिज ऊर्जा को योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है. सही जवाब है यांत्रिक ऊर्जा. Iodine is essential for the synthesis of the thyroid hormones. In exam they ask iodine is essential for the synthesis of which hormone? The correct answer for this question is thyroxine T4 and triiodothyronine T3. What is the molecular formula of mass O2? Mass of O2. The correct answer for this question is the molecular mass of O2 is 32U. O2 का अणुभार क्या है? O2 का ऑक्सीजन अणु का अणुभार है 32U है. In which state the Hornbill festival celebrated? The Hornbill festival is celebrated in the state of Nagaland. Nagaland is the correct answer. Hornbill महोत्सव किस राज्य के मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है. What is the reaction called where ions are exchanged between reactants? The answer for this question is ions are exchanged between reactants is called the double displacement reaction. The correct answer is double displacement reaction. वह अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें अभिक्रियाओं के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? वहाँ अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बीच आयन आदान प्रदान होता है उसे द्विगुण विस्तान अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. Which is the only metal that is liquid in at room temperature? The correct answer for this question is mercury is the only metal that is the liquid at room temperature. कौन सा एकमात्र धातु कमरे में तापमान पर तरल होता है? पारा. मरकुरी एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल होता है. Which is the only non-metal that is liquid at room temperature? The correct answer for this question is bromine is the only non-metal that is liquid at room temperature. कौन सा एकमात्र आदुत कमरे के तापमान पर तरल होता है? ब्रोमीन एकमात्र आदुत है जो कमरे में तापमान पर तरल होता है. Which state has the first implement of the unified pension scheme for the government employees and when it is take effect? Maharashtra become the first state to implement the unified pension scheme for its state government employees on August 25, 2024. The scheme will take effect on the April 1st, 2025. कौन सा राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना है? महाराष्ट्र सही जवाब है. When a light travels from a rarer medium to denser medium, what happens? The correct answer for this question is speed of light reduces and it bends towards the normal. The correct answer is it bends towards the normal. How is 1 volt is defined in terms of the joules and coulombs? The correct answer for this question is 1 volt is equal to the 1 joule per coulomb. 1 joule per coulomb is the correct answer. एक वोल्ट को जूल और कूलम में के संदर्भ में कैसे परिभाषित किया जाता है? एक वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है. What happens when lead nitrate is heated? When lead nitrate is heated, decompose into lead oxide and nitrogen dioxide and the oxygen is released. What is the formula for lead nitrate? PbNO3 twice. जब पारा नाइट्रेट गर्म किया जाता है तो क्या होता है? जब पारा नाइट्रेट गर्म किया जाता है तो पारा ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाती है. What is the direction of the magnetic field inside the solenoid? The direction of the magnetic field inside the solenoid is parallel to the axis of the solenoid and moves from the south to north. सोलोनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? सोलोनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सोलोनोइड की दूरी से समांतर होती है और यहाँ दक्षिण से उत्तर की ओर होती है. Myopia, short-sightedness, and the hypermetropia are the two conditions that occur when light does not focus properly on the retina. The correct answer is short-sightedness and far-sightedness is the correct answer. Thank you for watching. These are the key answers for RRB technician December 26 shift to